everyone, Jai Hind to all. Our topic is Roman numerals यानी रोमन संख्याएं. There are 7 basic symbols to write any Roman numerals. किसी भी रोमन अंक को लिखने के लिए 7 बुनियादी प्रतीक हैं. These symbols with their corresponding Hindu-Arabic numerals. ये प्रतीक उनके संबंधित हिंदू अरबी अंकों के साथ हैं. रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. I 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. Important notes, महत्वपूर्ण लेख. In the Roman system, there is no symbol for zero. रोमन प्रणाली में शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं है. This system is also not a place value system. यह प्रणाली भी एक स्थानीय मूल्य प्रणाली नहीं है. Rules for forming Roman numerals. रोमन अंक बनाने के नियम. Repetition of a Roman numeral means addition. रोमन अंक की पुनरावृत्ति का अर्थ है जोड़. Only I, X, C, M can be repeated. Examples, उदाहरण. I equals to 1 plus 1 equals to 2. X equals to 10 plus 10 plus 10 equals to 30. C equals to 100 plus 100 equals to 200. M equals to 1000 plus 1000 equals to 2000. V, L and D cannot be repeated. No numeral can be repeated more than 3 times. Like I1, I2, I3, X 10, X 20, X 30, C 100, C 200, C 300. A smaller numeral written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral. बड़े अंक के दाईं ओर लिखा गया छोटा अंक हमेशा बड़े अंक में जोड़ा जाता है. V larger numeral, I smaller numeral, and smaller numeral is the right of larger numeral. So 5 plus 1 equals to 6. C triple X. C larger numeral, triple X smaller numeral. Smaller numeral is the right of larger numeral. So C triple X equals to 100 plus 10 plus 10 plus 10 equals to 130. Rule 3. A smaller numeral written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral. बड़े अंक के बाईं ओर लिखा गया एक छोटा अंक हमेशा बड़े अंक से घटाया जाता है. V, L, D are never subtracted. I can be subtracted from V and X only. Example, IV. I is smaller numeral, V is larger numeral. So, smaller numeral is left of larger numeral. 5 minus 1 equals to 4. X can be subtracted from L and C only. Examples, XL equals to 50 minus 10 equals to 40. XC equals to 100 minus 10 equals to 90. C can be subtracted from D and M only. C D equals to
500 minus 100 equals to 400. Rule 4. When a smaller numeral is placed between two larger numeral, then it is always subtracted from the larger numeral. जब दो बड़े अंकों के बीच एक छोटा अंक रखा जाता है तो उसे हमेशा बड़े अंक से घटाया जाता है. एग्जाम्पल्स: x I v 10 plus 5 minus 1 equals to 14. c x I v 100 plus 10 plus 5 minus 1 equals to 114. घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू.